डबल प्रमोशन की बात करते थे, वो तो इनफॉर्मली होता था स्कूल्स के अंदर। बट नाउ गिफ्टेड लर्निंग एबिलिटी अगर है और बच्चे में प्रायर लर्निंग कैपेसिटी है, जैसे कि आप एक इंसान, आई नो अ पर्सन whom people think them the person to be BTech, but he is actually not a BTech. He is not having that degree. He is a general honors. But how he learned? By the virtue of his family business, he learned that. उनमें वो स्किल्स आ गए कि वो एक टास्क को उस फील्ड के, उस स्पेसिफिक फील्ड के टास्क को डील कर सकते हैं. So this he has learned from his family business. So this recognition of prior learning, इसके भी क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे. इफ यू आर हैविंग अ कॉम्पिटेंसी, सिर्फ मार्क्स लाने से अब आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी. यू नीड टू अर्न दैट कॉम्पिटेंसी. अब सारा कुछ लर्निंग आउटकम पे है, आपकी कॉम्पिटेंस लर्निंग कॉम्पिटेंसी पे बेस्ड है. ठीक है, सिर्फ मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा. वी नीड some hours to complete the course and some assessment also we need to go through. और competency based questions के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, तो more and more will be incorporated. Integration, progression and mobility into formal education ecosystem from non-formal to informal. Like एक साल मैंने कॉलेज में पढ़ाई की and after that I am not able to continue in a proper college institution. I am having maybe 3-4 hours to study. और मैंने कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की, तो that informal thing also will get recognition if we are अटेंडिंग दैट कोर्स. हमने कोर्स अटेंड किया इनफॉर्मल या ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग कर ली बीच में, और फिर वापस हम लोग थर्ड ईयर में एडमिशन लेने आए. फिर फर्स्ट ईयर में छोड़ा, सेकेंड ईयर में वी आर डूइंग अ ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन कोर्स. और उसके बाद इफ वी वांट टू कम बैक एंड इफ वी हैव अर्नड द क्रेडिट्स, जो 0.5 क्रेडिट पॉइंट्स हमारे होने चाहिए सेकेंड ईयर के, इफ वी आर अर्निंग दैट, तो वी कैन गो डायरेक्टली टू द अंडरग्रेड थर्ड लेवल. ऐसा कर सकते हैं. तो दैट इज मोबिलिटी इनटू द फॉर्मल इकोसिस्टम. फॉर्मल से नॉन फॉर्मल में भी जा सकते हैं, होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं. सो इट हैज सेपरेट क्रेडिट पॉइंट्स फॉर दैट. Okay. So additional course, if we are doing additional, see 40 credits, basically funda is in junior grades till grade 5, it's 800 hours per academic year. हमें 800 hours complete करना है till grade 5. तो हम लोग 1 point earn करेंगे. We'll earn 1 credit point, right? That is the level of 8 levels we have. It has been divided from pre-primary to PhD. PhD is the highest, that is 8th level. 8th level. हम लोग और ऑनवर्ड्स हम लोग 1200 ईयर्स स्पेंड करेंगे, और ये सारे सब्जेक्ट्स के बीच में वी हैव टू डील विद ऑल सब्जेक्ट्स. और ये 1200 आवर्स इज नॉट जस्ट क्लासरूम टाइमिंग, बट वो बैगलेस डेज जो हमारे हैं, द एक्टिविटीज, द एक्सकर्शंस, ऑल द प्रेजेंटेशंस, all are counted together and make into a complete 1200 hours. ठीक है, तो हमें 40 क्रेडिट्स मिलते हैं, राइट? मतलब पर 30 आवर 1 क्रेडिट. 30 hours we are spending. Simple calculation है, everybody can do that. 1200 divided by 40, 30 hours for per credit. ठीक है. अगर हमने कोई एडिशनल कोर्स किया, मे बी वी डू वन एडिशनल, हमने डेटा एंट्री कोर्स कर लिया या कुछ एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर लिया, पेंटिंग, डांस, व्हाटएवर. When one of the IITs is having a provision of dance also, so we will earn additional credit points for that. अब सेफ लेवल पर होकर भी बेटर क्रेडिट पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं. देयर इज नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन दीज एरियाज. एक एरिया से स्विच भी कर सकते हैं. इट इज सो फ्लेक्सिबल. नाउ ये क्रेडिट्स होते क्या है? द टोटल लर्निंग ऑफ आवर्स, क्रेडिट पॉइंट्स जो फाइनली हमारे ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाते हैं, वो क्या होते हैं? The total learning hours of students and learners can be creditized according to that, subject to assessment. आप ये 1200 hours complete कीजिए, complete these 1200 hours, then including all spheres,
And after these 1200 hours, you need to go through an assessment process. Exams honge, aisa nahi exams nahi honge. Assessment process, and you prove that yes, I am competent enough to earn these credits. हम इतना credit लेने लायक हैं, then obviously आपको वो credit scores मिलेंगे और वो आपके बैंक में चले जाएंगे. बिल्कुल बैंक की तरह काम करता है एबीसी, जो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं जहां में मनी ट्रांजैक्शन करते हैं. द एनसीआरएफ क्रेडिट्स फॉर 2 कोर्सेज क्वालिफिकेशन में बी एडेड ईच अदर एंड एक्यूमुलेटेड. 2 कोर्स कीजिए. अब पहले जैसे था कि आप ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स आप साथ में नहीं कर सकते, वो चीज अब नहीं है. इफ यू आर डूइंग ऑफलाइन कोर्स, आप साथ में ऑनलाइन कोर्स भी कीजिए, डिफरेंट आवर्स में कीजिए. ब्लेंडेड लर्निंग इज नाउ incorporated into the national education policy and NCrF as well. तो आप एक्स्ट्रा कोर्स भी कीजिए, आपको उसके एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे. And accordingly, you can redeem it to get degrees. I hope I'm making myself clear. Okay, so these were the 8 levels which I was talking about. Okay, for school education में maximum हम 4th level तक जाते हैं. +2, 11, 12, level 4 तक हम लोग जाते हैं. And after school education जब हमारा खत्म होता है, undergraduate level से PhD तक 8 levels हम लोग जाते हैं, right? Undergraduate levels में we are earning from 4 to 4.5. Every year is having 0.5 weightage. और फिर when you are going from PG to PhD, आपको direct 1 level up होता है. That is 1 level up. And this 8 levels are in both. After all, our effort is to bring equivalence in vocational courses and academic courses as well as the skills. So दोनों में 8 levels ही होते हैं. Both are having 8 levels. Let's make it more clear. ये chart which is there given in your NCrF document, ये 3rd November 2023 को ये circular finally आया था, जिसमें इसको implement करने की बात की थी. Before 2 years ना, this was put on the public platform पे डाला हुआ था, so that all the academicians can give their point of view, and that can be, if logical, then that can be incorporated into it. Okay, the total credit points earned by the student in particular year could be obtained by multiplying. ऐसे नहीं समझ आएगा till we are going into that chart. ये चीज समझ में नहीं आएगी. I hope ME is clear. Multiple, but वो points earn करके. This is a chart जो आपको NCrF में बहुत अच्छे से मिल जाएगा. Table number 3. You can go for reference after the workshop. If you have any doubts, then you can go and refer to it. ठीक है, ये आपको बहुत क्लियरली समझाता है कि वो हाउ क्रेडिट पॉइंट्स आर अर्न्ड. ये हमारा लेवल्स है. ये आप देखिए, ये लाइन जो है हमारी लेवल्स है. दीज आर द लेवल्स. जस्ट 1 second. This band is disturbing me. Right. So these are the levels जिसके बारे में हम लोग बात we were talking about. Preschool को they have given 0.1 level. ठीक है. And the 3 years are multiplied and we get 18. So finally हम लोग जो credit points earn करते हैं ना, still people are coming, entering and going. It's always so disturbing. Right. So final credit points earn करना कैसे calculate करते हैं? Like these are our credit scores 40 जो hours हमने earn किए, right? ये these are the levels. For example, जब हम लोग 3rd year middle school complete करते हैं 8th class तक, तो हम लोग 2 points earn करते हैं. Till grade 5 level, we are earning 1 point. Then the next 3 years till grade 8, we are earning 2 points. And these are the number of hours. 40. ये हमारा क्रेडिट स्कोर है. तो फाइनल क्रेडिट पॉइंट इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल क्रेडिट पॉइंट. लाइक यू कैन सी यूजी सेकेंड ईयर लेवल पे 40 वाज अ क्रेडिट स्कोर अर्न्ड, एंड फाइनल क्रेडिट पॉइंट्स कितने होंगे जो हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, दैट विल गो. जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द लेवल एंड यू विल गेट द आंसर. जैसे आप लोग इतने सारे पॉप मैसेजेस कर ही रहे हैं, तो एक मैसेज वो भी कर दीजिए प्लीज.
like if you want to calculate the credit points, तो हम लोग कैसे करेंगे? Anybody can tell me? यूजी थर्ड लेवल पे 5.5 इज आर लेवल, जो 8 लेवल्स मैंने दिखाया था डायग्राम, दैट वन. एंड देन क्रेडिट स्कोर इज 40 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स. सो हमारा फाइनल क्रेडिट पॉइंट्स अर्न कितना होगा? मल्टीप्लाई बोथ एंड यू विल गेट द आंसर. सिंपल. और यही क्रेडिट पॉइंट्स फिर फाइनली स्टोर हो जाता है. आई थिंक आई नीड टू स्पीड अप. आई एम muted. Sorry. If it's not clear, you can go to the NCRF document. Now this is very important to understand ABC. This ABC is our academic brand of bank of credit, and you all DigiLocker, everyone knows now. It is attached to a link with our Aadhaar ID, right? Aadhaar card. So simple. ये academic bank of credit will also be part of in the DigiLocker. हमारे DigiLocker में ही होगा. राइट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. और इसमें हम लोग जो जो कोर्स करते जाएंगे अकॉर्डिंगली डेफिनेटली द इंस्टीट्यूशंस विल गिव द रिपोर्ट. मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 9th और 11th के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के स्कोर मांगे ही जाएंगे हमसे. सीबीएसई विल बी आस्किंग दैट मोस्ट प्रोबेबली. सो एकेडमिक बैंक, इसलिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट एनसीआरएफ in this session itself, the coming session. We have to do that. So academic bank of credit shall be expanded to include credit earns through school education में भी points earn करें एक साथ. Same level पे person, if you want, you can earn more credit points than the general person. Yes, we can join in some other courses as well at the same time and upskill ourselves. So while doing this upskilling, we will earn with internship, with project works, with activities, we will earn more and more credits, and ये हमारे डिजीलॉकर में चला जाएगा. Whenever we want, we can. 7 years का टाइम होता है, उसमें रहता है वो. In that we have to redeem it. बिल्कुल जैसे बैंक वर्क करता है, exactly वैसे ही. आपने अपने क्रेडिट्स जमा किए, when you want, you can redeem it. So, again, I muted myself. Yes. Now I think I'm audible now. NCrF also enables experience को भी बहुत काउंट करते हैं, राइट? इवन नेशनल लेवल के जो अचीवमेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स एंड ऑल, योगा फील्ड में, किसी भी फील्ड में, इवन आर ये जो हमारे योग का नॉलेज जो हमें है, अपने वेद पुराण, इन चीज़ों को भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. दैट इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड. पहले ये चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं होती थी, बट नाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स ऑल्सो. सो NCrF includes relevant experience. अगर हमारे पास है, एक्स्ट्रा कोर्सेज हमने किए हैं, तो डेफिनेटली दैट ऑल्सो विल बी काउंटेड, है ना. कंपिटेंसी हमें अपनी प्रूव करनी है. और जैसे भी हमने ये पॉइंट्स अर्न किए हैं, या डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू किए हैं, या वोकेशनल एजुकेशन प्रॉपर फेस टू फेस लर्निंग में जाके किया है, या मे बी कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग की है. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बीच में 1 year का कोर्स करके छोड़ देता है, and then he goes on to work in some force है, maybe he or she is forced to do a job. वो जॉब एक्सपीरियंस पहले काउंट नहीं होता था, दैट वाज नॉट गिवन एनी क्रेडिट, बट नाउ दैट आल्सो विल बी गिवन क्रेडिट्स. उसके भी क्रेडिट्स ऐड होंगे. Oh God. I was just saying that NCRF is a very complicated topic. In 1 hour, I'm just trying to give a comprehensive view of it. Right? तो हम लोग कहाँ कहाँ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं? स्कूल एजुकेशन के थ्रू 1200 hours 40 credits per year अर्न करेंगे. मीन्स 30 hours is equal to 1 credit. एक्स्ट्रा वोकेशनल एजुकेशन में 30 hours और स्पेंड कीजिए, एक और क्रेडिट मिल जाएगा.
can multiply it with the level and you will get your final credit score. फिर हायर एजुकेशन में हम लोग जा सकते हैं एंड ये ये अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है ये वो है अभी इस तरह से चल रहा है राइट सो ये समवे भी है दिस इज वन पैटर्न हाउ द दिस calculation is done in somewhere. Somewhere is skill assessment matrix for vocational advancement, right? So इसमें skill education और it is happening. This is the current breakup of somewhere. थ्योरी देखे किसी किसी में अभी दिए जा रहे थे पहले से एनआईओएस में ये सिस्टम और अभी ये समवेयर में भी था थ्योरी 1 credit for 15 hours और प्रैक्टिकल्स के लिए 1 credit for 30 hours but now these are changing it will be same in all kinds of courses. Okay. These are the UGC guidelines for providing skill-based education under National Skill Qualification Framework. Skill component 60 to 70% practical classes. ये स्किल कंपोनेंट्स जो हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं वर्कशॉप्स कर रहे हैं इंटर्नशिप्स कर रहे हैं ये ट्रेनिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं इस तरह की ट्रेनिंग्स पे भी वी विल गेट सम क्रेडिट्स देन जनरल एजुकेशन में डिजिटल स्किल हो क्रिटिकल स्किल कम्युनिकेशन स्किल ये सब द कोर्सेज विच वी आर डूइंग फॉर डेवलपिंग दैट ये सारे जनरल एजुकेशन के कंपोनेंट्स हैं एंड वी विल अर्न क्रेडिट्स फॉर दैट आल्सो. All right. Institutes, they are also already having, and it's flexible. Na? So the regulatory authorities have their own credit system. They have different levels of credits. जिसके after which they give credit scores ना वो उनके अलग अलग levels हैं. They can decide if first year से second year में promote करने के लिए how much credit they can give. वो flexibility education institutions को दी हुई है. NSQF is anchored in National Council of Vocational Education and now it is revised to 8 levels. ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ. So we can proceed. Time बचा है. We have 20 minutes. Right. NSQF is based on the outcome based approach. तो अब क्या टारगेट है हमारा मार्क्स नहीं मार्क्स लाना इज नॉट द टारगेट हमारा टारगेट है कंपिटेंसी अचीव करना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप करना right I'm clicking on the screen then it's muted. All right. The national education policy ये सारा कुछ national education policy के थ्रू ही तो हो रहा है. Lay emphasis on the integration of general education and vocational education, upskilling ourselves seamlessly बिना किसी परेशानी के. How we can go through vertical mobility मतलब academic acceleration और horizontal mobility means shifting from one institution to another. लेकिन वो हम लोग किस लेवल पे कर सकते हैं we can do it on the same level only. वो 8 levels which I am talking about. ऐसा नहीं है कि सीधा 10th से आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लोगे उसके लिए फिर आपको एडिशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे टू अर्न द इक्विवेलेंट क्रेडिट पॉइंट्स है ना. एंड व्हाट इज द टारगेट फाइनली क्या होगा ये जो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग स्किल्स का टारगेट जो डिफरेंस है ना जो the social prejudices also वो सारे भी हट जाएंगे and there will be academic equivalence of all sorts of skills. Yeah, ma'am, you're not audible.
Yeah, ma'am, please unmute and speak. Priya, ma'am, your voice is not audible. Please unmute yourself. Himanshu sir, so she's connecting with the data. Her Wi-Fi is disconnected. Connecting her, sir. Okay. Sir, the RS of
Thank you. Sorry everyone for the network issues. So kindly make me co-host for sharing the slide quickly Yeah. because time is also less. Wait. I've asked who is joined with the name Aryavarta Sahodaya profile name. Please, you please continue, ma'am. Thank you. Extremely sorry. Seriously, I'm feeling guilty, literally, over here. No, But don't what to be. do with the network There are issues? technical issues. Yeah. What to do with network issues, sir? Today the weather is not supporting at all. Mhm. Yes, we were discussing about advantages, but I hope I have given a comprehensive view. कम से कम credit points निकालना तो we have all understood कैसे निकालना है. So advantages of NCrF यही है कि removal of separation सबसे it's a very major transition that is taking place in the education system. Academic equivalence, mobility I hope आप लोग समझ गए हैं, horizontal भी और vertical भी. Then the multiple entry and multiple exit options, MEME याद रखिएगा. Whenever you want, वो आपका year waste नहीं होगा. Basic idea of MEME is your year, academic year will not be wasted. Even if you are working somewhere, वो experience भी आपका waste नहीं होता है. Everything is counted. ऐसे भी सिर्फ डिग्री से नहीं होता ना. If you need to have that skill of working that. इंटीग्रेशन एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ एजुकेशन स्किल वर्क एक्सपीरियंस हर किसी के अपने अपने पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं. देन इनेबल क्रेडिटाइजेशन ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विथ वैरिंग लर्निंग कैपेसिटी. हर किसी का अपना स्पीड होता है पढ़ने का, तो अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर एकेडमिक एक्सेलरेशन और यू कैन स्लो डाउन द प्रोसेस एज यू विश. इनेबल्स प्रोविजन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग. हमने पहले से अगर कुछ सीखा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस है, तो दैट ऑल्सो विल बी काउंटेड इनटू आवर क्रेडिट स्कोर्स. ठीक है. नेक्स्ट, what constitutes these learning hours? ये 1200 hours which I was talking about from 8 से ऊपर 1200 hours which 1 year में आपको 40 credit points दिलाते हैं. 40 credit points you're earning. What all constitutes it? The classroom teaching as well as lab work, practicals, innovation. तो आपका कोई भी effort basically is not wasted. Any learning of any sort is not wasted. It's all giving you some credits. Okay, then obviously exams are always important. Assessment techniques है, class test, quizzes, other forms of assessment जिसको हम लोग score करते हैं. All that is counted into this. Then even performing arts, handicraft, yoga, आपके achievements, debates में, essay writings, your all skills. Even when you're participating in a musical performance in your school, that also will be counted, or a college. The self-defense classes, even ये जो बच्चे जीतते हैं, ओलंपियाड्स होता है, हैकाथॉन्स होते हैं, इसमें जो बच्चे जीतते हैं, that is उसके अभी कोई क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलते हमें, but that also you can earn credit points to that also. तो कितना अच्छा है ना, सब कुछ कितना सही हो गया है. मतलब this will actually हमारे सारे एफर्ट्स काउंट हो रहे हैं. स्पोर्ट्स, फिजिकल गेम्स भी काउंट हो रहा है, और वर्क एक्सपीरियंस पे भी वी आर गेटिंग पॉइंट्स. लाइफ स्किल्स दैट वी आर अर्निंग, दैट ऑल्सो वी आर गेटिंग पॉइंट्स. इवन नॉट ओनली दैट, सोशल वर्क, इफ यू वांट टू हेल्प योर कम्युनिटी, अगर आप कोई कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, या कोई सोशल वर्क करते हैं, आई मीन टू से हियर ओवर, अगर आप कोई सोशल आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके हायर लेवल पे, या एनसीसी, ये सब में आप जो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो यू आर अर्निंग सम क्रेडिट पॉइंट्स. इनफैक्ट IITs हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग दीज क्रेडिट पॉइंट्स टू देयर स्टूडेंट्स. मे बी वो बहुत कम होगा, मे बी माइनर होगा, लेकिन कुछ क्रेडिट पॉइंट्स आप अर्न करेंगे वहां पे भी. एंड नंबर ऑफ आवर्स के अकॉर्डिंगली इट काउंट्स बिसाइड्स द competencies.
In fact, हमारी wanted to gather into it, right? So vocational education, training, skilling, तो वो सब तो count पहले से भी हो रहा आ रहा है, but not all projects and assignments are getting some points. यहाँ मिलेगा हमें. Then what constitutes the field trips, projects, internships, और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्फ लर्निंग आवर्स, जो होम असाइनमेंट पे जो हम लोग आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो, ओपन स्कूलिंग, होम स्कूलिंग, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, एनीवेयर वी आर लर्निंग, वो सारे काउंट हो रहे हैं. ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है. उसके लिए इफ यू, एक प्रोविजन मैं सिंपली बता देती हूँ. इफ आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यू वांट टू एग्जिट, तो आपको 40 पॉइंट्स के सिवा 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अर्न करने पड़ेंगे फॉर लीविंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये नॉर्म है हायर एजुकेशन का. 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, एंड देन इफ यू वांट टू कम बैक इन द सेकेंड ईयर, टेक एडमिशन, यू आर मोस्ट वेलकम टू. लेकिन वो 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा यू हैव टू अर्न थ्रू सम मीन्स, राइट? ये एक बहुत अच्छा comprehensive graph which is presented in your NCrF for understanding. देखिए, the academic access, the red line is showing the academic access. You can see 8 levels यहाँ पे है, and the green line which is going up is the skill access. So skill access also having 8 points and academic access also having 8 points. और ये जो blue line that you are seeing, that is telling you कि अगर आप 1 year experience you are having, so you are considered to be trained. If you are having 1 to 4 years of experience, work experience, you are proficient. If you are having 4 to 7 years of experience, you are expert. And if you are having more than 7 years of experience, so you will be counted as master. So that also is having separate credit points for it. All 3 will together earn you credit points. And not having much time, so these are the actually charts which are presented before you. और इसके भी पॉइंट्स अर्न करेंगे. इफ यू आर इनटू द प्रोफिशिएंट लेवल ना, तो आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स है, अगर 120 क्रेडिट्स है, तो वो 0.33 आवर्स काउंट होंगे पर 30 आवर्स जो आपका एक्सपीरियंस है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड, और आप एक्स्ट्रा क्रेडिट्स यू कैन अर्न एक्स्ट्रा क्रेडिट्स फॉर इट. Okay, if you are into a proficient level, you are getting 0.33% extra weightage, and now if you will multiply it with the number of hours, then you will earn more credit points. I know it's not so easy to understand in a go, but if we go through it, then we can understand. The NCrF key points क्या है? Notional learning hours and credits कितने आपने? 1200 hours per year. और कितने क्रेडिट? 30 आवर्स, 40 क्रेडिट्स वी विल लर्न. 30 नोशनल लर्निंग आवर्स इज इक्वल टू 1 क्रेडिट. ठीक है? क्रेडिट लेवल्स आई हैव ऑलरेडी शोन यू अ वेरी नाइस चार्ट, टेबल नंबर 3, यू कैन गो एंड रेफर टू इट. एंड ऑल दीज पॉइंट्स हमारे जो एकेडमिक बैंक है, जैसे हम लोग पैसे जमा करते हैं ना बैंक में, वैसे हमने वी विल अर्न आवर क्रेडिट्स एंड स्टोर इट इनटू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. ठीक है? ये डिजिटली स्टोर होगा कहाँ पे? डिजी लॉकर में, विच वी कैन, हम लोग आधार कार्ड से अभी बच्चे रिजल्ट भी वैसे ही लेते हैं ना डिजी लॉकर के थ्रू, तो वी कैन स्टोर दैट, वी कैन रिडीम दैट पॉइंट एंड अर्न आवर डिग्रीज आफ्टर प्रूविंग आवर कॉम्पिटेंसी. ये पॉइंट भूलना नहीं है, आफ्टर प्रूविंग आवर कॉम्पिटेंसी ओनली. और कॉम्पिटेंसी में what is meant by competency? This KSPA. After completing some level of education, you must have the knowledge, skills, professional learning level and aptitude. वो प्रूव करना होगा आपको कि you are having that competency level, तभी आप आगे जा सकते हो. ठीक है? सारे टेबल्स तो I won't be able to show because time नहीं है. ये ऑफलाइन मोड में होता तो बेटर होता, लेकिन ठीक है, चलिए. So how these credit points are accumulated, I think in the table I have made it already clear. And the credit transfer. The transfer of credit shall fulfill the following objective. ये जो credit हमारा जाता है, if we want to change from one institute to another ना, तो we have to
show that we have earned this much credit. I am fit enough to enter into the second level. Okay, I am having equivalent employability skill. तब आप एक लेवल के इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. वो अगर टेस्ट लेना चाहे तो दे कैन टेस्ट योर कॉम्पिटेंस लेवल, दैट इज परमिसेबल. ठीक है, आई विल बी स्किपिंग दीज. एंड वन वेरी, this we have discussed already. The international mobility, internationalization of education, ये सारे accords हमारे already हैं. Now the credit we will be earning will be recognized on international level. हम लोग बाहर भी जाएंगे तो it will get recognition. और ये उस circular से लिया हुआ है. It shows that how you will earn points. Like if you are 10th or instead of doing +2, 11th 12th की पढ़ाई करने की जगह, if you go and do NAC, NS level 3.5 का कोर्स अगर आप कर लेते हैं and you're earning, NIOS से पढ़ लिया, ITI से 2 years का कोर्स कर लिया, and you have that language proficiency level, तो आप डायरेक्ट 12th में भी जा सकते हैं. Or you will be considered having equal credit points as a 12th standard person, even without going into it. Okay. The key points. One important thing, 75% attendance is mandatory. You have to ensure 9th standard के onwards बच्चे school attend नहीं करना चाहते, तो we have to make it sure that yes. Okay. If we calculate our 1200 hours, we have to divide it equally into different subjects, main subjects. So it comes to 210 hours per subject. This is the existing scheme, and what is the proposed scheme? We will come to that. Yes, this is how the credits is allocated. 210 hours means 100 marks, and you will earn 7 credits for it. The subject wise number of hours. So अब जब हम अपना curriculum design करेंगे, when we'll make our annual syllabus, we need to have one more column, that is the number of hours. If it is 1210 hours for one subject, it should not exceed more than that. And this is how our report card should look like now. Grade points as well as credit points we need to add in our grade 9 and 11 report cards as well. Okay, I think I have exceeded the time. Final, this is the proposed scheme I've already discussed. Number of hours. Actually, just one last point I'll add. Because of the network issues, I missed some time now. The students have to pass. You can take 10 minutes if you wish to conclude, to clarify your content. Actually, thank you. Just the proposed scheme I want to elaborate. It's a very important point. Exactly. I have skipped already several points. Yeah. The coming session, 11th grade 11 proposed scheme is, now it is compulsory to have 2 languages. Currently, we can have only English, but it is compulsory to have 2 languages in which one has to be native of India. At least one language. Native language of India, it can be Hindi, Tamil or whatever, Indian native language. And then the other 4 subjects with an optional 5th subject. So 2 languages are now compulsory on 11 in +2 level as well in the NCrF. Okay. So group 1 languages according to your choice, 2 languages. And group 2 is art education, physical education and vocation. If you want, you can mix between the groups as well. ऐसा कुछ नहीं है कि social science group 3 से लेना है तो सारे subjects social science से लेने हैं. You can move to group 4 also and take some other subject. ठीक है, but ये बहुत major change है कि 2 languages होंगे. काफी major change है. Okay. And students have to pass 6 subjects, 2 languages, as I told, 1 Indian language. और उसके सिवा 4 subjects which they will have to choose from those levels which I have just shown in the previous slide. Total number of hours is 1200.
तो सब्जेक्ट वाइज आप 7 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. लैंग्वेजेस विल गेट 180 hours and 6 credits, and other main subjects will get 210 hours per year. करिकुलम में ये पॉइंट ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 1 column कि इस चैप्टर को how much time you are going to give, because it should not exceed the number of hours prescribed. That's the thing. These are the grading system which we are much accustomed with. And this is how our curriculum is going to look out like from the coming session, from this session. Number of hours and how many credits per hour we are earning. That has to be included in that. All right. So today we discussed the main features of National Credit Framework, that is standardized credit system, the learning outcome-based assessment. All are very valid points and are going to drastically revamp the education system completely. The flexibility and choice, recognition of prior learning, and after implementation, the policy reforms will be there. Teachers training are mandatory. That's why we are doing it, and we are equipping ourselves, making ourselves more informed of the latest reforms in the education system. The curriculum mapping, as I have told, number of hours, and obviously the stakeholder collaboration is much important in this. So thank you for bearing with me, rather I should say today, Thank you because so of much, the ma'am. network issues, I guess. You elaborated very nicely, of course. Thank Even you, after sir. such a distractions and the network issues. If any questions are there, sir. Yeah, the participants can ask questions in the chat box. Okay. Ma'am, as you Okay. said that in between, if the child is completing the within 6 months, the course of that, they can shift it to the other higher education. How Higher it's level, possible? yes, ma'am. Higher classes, I mean, how can it's possible in the schooling system? Because we Ma'am, have the academic session from April to March on that system. 6 months within the 6 months, if a child is completing the complete syllabus or curriculum of that years, and if how can we shift it in between? Of course, ma'am, the regulatory authorities also come into scene over here. There is a provision of academic acceleration. If the child has achieved, but not only in one subject, no, the child has to achieve that credit points of each and every subject. Then only the child can be like, initially also informal double promotion system was that it is much like that only. The child can be accelerated according to his own pace if he has earned the credit points, he or she, of all subjects. It's not just one subject and number of, then he can be accelerated to the other level, ma'am. Yes, ma'am, that's point only. Suppose Mhm. X child is completed all the subjects, then how in a school system can accelerate or can upgrade that child and how it's be incorporated that I will, because by that time standard 8 half of the syllabus will be over. Then how it's possible? Is there is any other regulation has to become that I want to know? That if the regulatory authority or the institution in after discussing with the parents, if they think it to be suitable, then they can accelerate the child into the next level. Yes, there is a provision for this. No, I think That point only. exact norms are on way. It has not Exact, yet been no, settled. yes, Not yet it's been That's settled. actually why I'm on saying way. after 6 In months, the by the national 6 months, framework, it's child, written. for It has example, Yes. grade 7 child is completed all the credit he has achieved, and after 6 months, if he have been upgrade to grade 8, by that time grade 8 syllabus he will miss it. That's why Exactly. that means some regulation norms will come up. Yes, Let's wait for that. gradually they will elaborate it more and clarify the national framework. But till now, academic acceleration point is mentioned. Okay. Thank you for the question, ma'am. So thank you so much. This question came to my mind as well when I was going through it. No, actually, so I would say my point. What is there in US and UK, they do it. They have the acceleration. The word academic acceleration has come from US actually.
Yes, They yes, do sir. it, Absolutely. they have the credits decided. And if a student That completes is the where we are credit, shifting to credit system, sir. if the student completes the credit, there is an academic council. The academic council sits up, like they sit in university prior to submission of the PhD. And then Right. they decide that whether the student qualifies for this or not. So that is the way the US adopt. But what is going to happen here in India with us is still on way. So thank you Yeah. so much. It's an We excellent are trying to question implement. from the resource person. I'm very, very thankful once again, Priya ma'am. Very nice, very elucidating Thank you. question. Thank you so much, sir. Thank you to Simple all the ma'am is parts. there. Let's call the Simple ma'am too, if she's Yes, in the. ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Good everyone. evening, Simple ma'am. Good evening, ma'am. Yes, Radhika, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am wants to say something. No, I don't want to say something. I am just Yes. asking that Simple ma'am, you can conclude it if you don't. Okay. Otherwise, Himanshu sir will do it. Okay. Okay. No, ma'am. I am here. So thank you, Priya, ma'am. Thank you once again from the all the members of Aryavat Sahodya. The thing that you had explained very well, you have told very true that this topic needs more time to understand it briefly. Absolutely. Absolutely. Yes, but you, in the meantime, you have explained very well, and I think all the participants has understand and they can convey the training things to their students so that they can understand about the credit. So thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you. Thank you so much, ma'am. Thank you too. Himanshu sir. Yes, I have already done. Now the participants are requested to complete the attendance within the given time frame. But as I said, we have extended the training for 10 minutes. So our attendance link will stay open for up to 6:10. So we are open up to 10 past 6. So, but please complete the attendance on time. Thank you so much. Thank you, everyone. May I leave, sir? Yeah, please.